Hello friends, this is Dr. Sunil Kadam, welcoming you to my channel, Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy these videos. Today we are going to discuss the investment accounting. Investment accounting. The two words are involved. Accounting, we knew what is meant by accounting: to keep a record, to analyze, for analysis, for taking decision, you need to analysis, and for doing analysis, you need some sort of documentary evidence, and that evidence is available when you do the accounting, keeping a proper record and analyzing it. But investment is an asset. When you purchase an asset with intention to get returns on it, is called as investment. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करना चाहे तो हमें पता है अकाउंटिंग मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका प्रॉपर साइंटिफिकली रिकॉर्ड करना। और जब आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब ये आप ऐसी एसेट परचेस करना जिसके पीछे उद्देश्य ये था कि वो जो असेट परचेस की है उससे आपको कुछ रिटर्न्स मिल जाए, जिसमें जिसकी वजह से आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो, और या आपको रेंट मिले, या आपको बोल सकते हैं रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इसके लिए जो आप परचेस करते हो तो उसको इसीलिए जो असेट परचेस करते हो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो चलो देखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के पीछे का उद्देश्य। बाय लर्निंग दिस investment accounting, you should be in a position to understand why investments are made, reason behind investment क्यों की जाती है, investment type of investment, प्रकार कितने हैं, accounting of purchase of sale, when you purchase any investment, accounting of that, accounting purchases and sales, जो आप investment purchase करते हो, sale करते हो, उसको record रखना आपको आना चाहिए। अप्रोप्रिएटिंग इनकम प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन ऑफ पीरियड, जब आप परचेस करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाता है, सर्टेन डेट्स के लिए दिया जाता है। तो आप जब परचेस किए उससे पहले उसके ऊपर आया हुआ इंटरेस्ट उसको एक्रीव्ड इंटरेस्ट बोलते हैं, और जब आप परचेस करते हो उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इंटरेस्ट नॉर्मल रिटर्न्स होता है। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करे, उसको कैसे अलोकेट करे, ये भी आपको आना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, अगर बोनस शेयर्स मिलते हैं तो उसको कैसे डील करना आपको आना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स सब्सक्राइब्ड, राइट शेयर सब्सक्राइब्ड एंड राइट री अनाउंस्ड और सोल्ड, ये क्या है, राइट शेयर्स क्या होते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और राइट शेयर का री अनाउंस या सोल्ड कैसे करते हैं और किया जाता है, तो अकाउंटिंग बुक्स में क्या एंट्री होगी हम देखने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ईयर एंड में इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये भी हम देखने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड, which accounting standard applied here for investment accounting? AS 13 is applied, let me tell you, and whatever we are going to discuss in this particular chapter वो सब AS 13 के तहत होगा। So let's move on and do the investment accounting क्या है। First task is to understand what is mean by investment. So as we discussed earlier कि भाई एनी ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल, कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति
अपने पास जो सरप्लस बचता है, सरप्लस, आशा करता हूं कि आप लोगों को पता है क्या है सरप्लस। सरप्लस या जो जो भी एक्सेस मनी अर्नड बियॉन्ड व्हाट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज अ सरप्लस। आप उतना कमा लेते हैं जितना आपका खर्चा है, उतना मतलब मार्क टू मार्क हो गया, मगर उससे ज्यादा अगर आपके पास बचता है उसको सरप्लस कहा जाता है। आपका खर्चा समझो 10,000 है और आपने 20,000 कमा लिया, तो सरप्लस यहाँ पे कितना हुआ? 10,000। मतलब सेविंग्स कितने हुए? खर्चे जाके जो बचता है उसे सेविंग्स कहते हैं। और हम इंडियंस सेविंग्स के लिए जाने जाते हैं। हमारा बच्चा बचपन से उसको सिखाया जाता है, पिगी बैंक बना के उसमें सेविंग करना उसको सिखाया जाता है, वही मेंटेलिटी आगे बढ़ती है और वो अच्छी भी है। बहुत बार ये इंडियंस की जो सेविंग मेंटालिटी है ना, बहुत बार अपने इकोनॉमी को बचा चुकी है। बहुत बार वर्ल्ड इकोनॉमी में क्राइसिस आया था और उस दौरान हम लोगों का जो सेविंग का आदत था उसकी वजह से अपने इकोनॉमी को उतना डैमेज नहीं कर पाया जो मंदी आई थी, जो बीच में 2-3 बार ऐसे ड्रास्टिक रिसेशन था जो अपने ऊपर इम्पैक्ट उतना नहीं कर पाया। और यही अच्छी बात है और करना भी चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं बता दूं, फॉरगेट अबाउट इंडियन, फॉरगेट अबाउट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस। if a business have a surpluses, and if it is keep ideal in your chat box or cash box, it meaningless, it won't fetch anything, it will remain as it is. But instead of that, if you know there is no need in immediate future of that money, so keeping it ideal is not acceptable. Instead of that, if you invest that amount in any one of the investment avenues, then definitely it would become, say, 1 lakh rupees is lying with your cash box. If you keep that 1 lakh rupees in a bank deposit, you will fetch certain interest on it. तो कहने का तात्पर्य ये है, किसी के भी पास अगर सरप्लस बचता है, वो सरप्लस वो अपने जेब में रख के कुछ उसका फायदा नहीं होता। उसके बजाय अगर वो बैंक में रखे तो बैंक उसको इंटरेस्ट देता है। आजकल बैंक इंटरेस्ट में थोड़ा कमी आ चुका है, मगर पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। जो भी है, सभी एंटायर वर्ल्ड के इकोनॉमी में ही रिसेशन चल रहा है। मतलब इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पे कम, बहुत कम है, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू पेंडेमिक, एवरी इकोनॉमी इज सफरिंग एंड देयरफॉर द इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन द लोअर साइड। तो फिर भी whatever you earn, that much itself, say it is 5% interest or 4% interest, 1 lakh 4% for say 6 months, if you purchase 1 lakh 4,000, at least 2,000 is appreciation in that. Instead of keeping ideal, it would remain 1 lakh only. Now it would you say it can become a 1 lakh 2,000. There is an appreciation, और वो होना चाहिए. The money fetches money, but that's why the people do invest. The business organization do invest, though the business intention is not to do the investment, not to earn a profit from the investments, but if there any surplus available, they used to do. Even the same case applied for individual. Now, if an individual are going to do the investments of its savings, then those has to be observed regularly. It's not that you are invested and you are forgotten. But if though you have invested in appropriate place, then it's okay. If you have not invested in appropriate place or appropriate company, then your investment will lose. You will lose that amount. And to avoid this, one should have an eye on your investment. You should know how much returns you are getting. Is that return is meeting with the inflation rate? Is it meeting with the future value and present value?
payback period is also to be considered. If it is not happening, then there is no point of investing in such investment opportunities where your inflation rate is not met with it. तो क्या फायदा? आपके जो इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट है, उतना भी रिटर्न अगर नहीं मिल रहा है, तो आपके वो इन्वेस्टमेंट होके कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए कोई भी, जो भी इंसान हो या बिजनेस हो जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर वॉच रखना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने रिटर्न्स आए। अभी ये करना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और वो अकाउंटिंग करने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस समझ में आने चाहिए। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वही सभी टर्म्स एंड कंडीशन। मगर बिफोर proceeding towards that, let me tell you, the AS Accounting Standard 13 is issued by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, in regards to this investment accounting, how to do the investment accounting, what way it has to be calculated, what should be considered as an investment, what should not include in a investment category. All these detailed wise they have explained, and they've given a definition. What is mean by investment? According to AS 13, investments are the assets held for earning income by way of dividend, interest, and rentals, for a capital appreciation, for the other benefits to the investing enterprise. देखा, ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वेस्ट करता है वो ऐसी एसेट परचेस करता है जिसमें से उनको डिविडेंड, इंटरेस्ट के तौर पे अर्निंग हो, साथ साथ कैपिटल का अप्रिसिएशन हो, और कुछ और बेनिफिट्स के लिए जो असेट परचेस की जाती है उसको इन्वेस्टमेंट। यही तो मैंने भी बोला था, व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स जो AS 13 में दिए, जो आपके सामने रखे हैं डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आर द असेट्स held for earning income by way of dividend, interest, or rentals, for capital appreciation. What is mean by capital appreciation? जस्ट नाउ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 1 लाख रुपए था अपना इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर कैपिटल। सो 1 लाख का इंटरेस्ट मिलने के बाद जो बढ़ोतरी होगी, 2 लाख, 1 लाख 2 हजार, या 1 लाख 5 हजार, 10 हजार, जितना भी बढ़ता है, दैट इज कैपिटल अप्रिसिएशन। तो उसके लिए जो भी आप देते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसको ही असेट के हेल्ड करते हो या असेट परचेस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। At the time of doing investment, there are three important factors which influence on investment. इन्वेस्टमेंट परचेस करते समय हमें तीन चीजों का अहमियत होती है, तीन चीजों पे ध्यान देना होता है। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी हो, उस दौरान आपको ये तीन पॉइंट्स के बारे में सोचना है। पहला लिक्विडिटी, दूसरा सिक्योरिटी, एंड तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी। So let us understand what is mean by liquidity. Liquidity is the term where you would be in a position to realize the amount from your investment. In other words, you would be able to sell that investment as early as possible. There are certain investment, it takes time to realize. There are certain investment which requires to sell out at least say it consume time. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में करते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए टाइम लगता है। समझो समझो अगर आपके पास पैसा था, इसीलिए आपने सोचा कि चलो इन्वेस्ट करते हैं बोल के, नया जहां पे डेवलपमेंट चल रहा है वहां पे आपने एक फ्लैट खरीद कर लिया।
और सडनली आपको पैसे की जरूरत आई, आपको पता नहीं था पैसे की जरूरत लगेगी, सडनली पैसे की जरूरत आई, तो पॉसिबल है क्या वो फ्लैट 2 दिन में बेच के वो पैसा मिल जाएगा? नहीं। तो लिक्विडिटी in case of investment in properties are on the lower side. मगर उसके अगेंस्ट आप सोचते हो, इफ यू इन्वेस्टेड इनटू द बैंक in FD or RD or saving account, then the liquidity is quite on a higher side. As and when you need it, you just go to the bank and take your money. But on the other hand, when you invested into the properties, land, it depends upon the situational advantage or disadvantage also matters there. If your property is in such a place where there is a demand, in that case you may able to realize the money as and when it is needed, within say 1 or 2 days. Even if your property is in the say near the station of any locality near the station, then you will able to sell that quickly. But if it is far away from the station, then you can think about that, then you are not able to sell it quickly. Even if it is in a tower, or if it is in for two storage, three storage building, it depends upon. So the point which I want to make it here, कि भैया आपकी इन्वेस्टमेंट के सिचुएशन कहाँ पे है प्रॉपर्टीज में, उसके ऊपर उसका बेचना डिपेंड होता है। अगर आप जब आपको जरूरत है तब उसको बेच के आपकी जरूरत अगर सेटिस्फाई नहीं करते, तो आपके उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जीरो है। तो जरूरत के हिसाब जरूरत के टाइम पे वो अगर हमारे जरूरत में नहीं आने वाला, तो फायदा क्या है? ऐसा बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे लोगों की ह्यूज प्रॉपर्टीज है, सडनली कुछ एक्सीडेंट हो गया और मेडिकल इमरजेंसी है और पैसा नहीं मिला, तो उस प्रॉपर्टी का फायदा क्या? वो बंदा तो अपने जान से जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ investing, one should think about what are my needs. Whenever I need money, according to that you should plan. I should get money after certain intervals whenever I need it. So liquidity is the one important aspect one should consider at the time of doing investment. Next one is security. Security means what? Whatever you invest, it should be secured. It should not you will, the investment will be vanished. No, the security, whatever you invest, should able to get you, fetch you that much amount back. That is security. There are certain investment avenues gives you more returns, but at that time the security goes on the lower side. The same one applies for profitability also. See, these three are having interlinked, or you can say it impacting on each other. If you think about profitability, then liquidity and security goes down. Or if you think about security, then profitability goes very down, but liquidity can be manageable. It's all interlinked. Profitability is what the ratio of getting returns. If you are getting enough return is good profitability, and if you are not getting enough returns on your investments, it's a on the lower side profitable, lesser profitable investment. So at the time of doing investment also, one should think कि भाई मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें से मुझे जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है उससे मैं अपना इन्फ्लेशन रेट तो मार्कअप करूं। नहीं तो मैं इन्वेस्ट करके बैठा और जो पैसे का इन्फ्लेशन हो रहा है, जो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन हो रहा है, उतना भी मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं मतलब मैं नुकसान में चल रहा हूँ। तो ध्यान रखें, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से रिटर्न भी ठीक ठाक हो। बहुत बार ऐसे होता है रिटर्न के पीछे पड़ जाते हैं और हमारा सिक्योरिटी गायब हो जाता है। मसलन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न अच्छा 20% के आसपास मिलता है, 20 या कभी कभी 25, कभी कभी 100, 150 भी मिलता है। It depends upon where you are investing, in which stocks you are investing, which company it is handling, and sometimes your luck also matters there.
But instead of investing there, if you invest into the primary market in a banks, the returns are now very low. But security in that banks are dead sure. But here, there's a possibility market may fall down, and whatever you invested, you may lose something, some certain amount of it. That's the high risk. So it is all these three aspects are interlinked or having interconnection. If you think about profitability, then you have to give up your security. If you think about liquidity, then you have to give up the profitability or the security. So we have to get a golden mean of all these three. We have to think about it depends upon the proper investment guides, or the people who are called as an investment consultant. They used to analyze the need of that organization or that individual, and they will decide if this person is needed, say certain amount after certain interval. According to that, they will start investing in say SIPs. I hope you know what is meant by SIPs. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर लेते हैं कि भाई उसको ये 10 साल के बाद अगर वो बंदे की शादी होने वाली है, तो उसको 10 साल में उतना पैसा चाहिए, तो अभी से इन्वेस्ट करके वो टाइम पे उसको पैसा अवेलेबल हो, तो उसके लिए उसी तरीके से किया जाएगा। नहीं तो बंदे की शादी है, शादी डिसाइड हो गया और पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट किया, उधर से पैसा ही नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसे है जो साहूकार होते हैं ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट रेट बहुत हाई होता है, इंटरेस्ट रेट, मगर पैसे मिलने की गारंटी कम होती है। तो ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम इंडिविजुअल अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और अपने इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न चाहता है, तो उसको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और अकाउंटिंग करके उसके ऊपर वॉच भी रखना पड़ेगा, और जैसे जरूरत है उसी मुताबिक, जरूरत के मुताबिक अपने इन्वेस्टमेंट चेंज भी करने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे अगर होता है, तो उस सभी चीजों का अकाउंटिंग कैसे करें वो हम देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रॉडरली एलोकेटेड इन टू कैटेगरीज, ऑन द पीरियड एंड ऑन द नेचर. On a period basis, the investment for longer period is called as a long-term period, and the investment for short-term period is called as a current investment. So to be precise, the long-term investment is those investment for more than 1 year, and current investment less than 1 year. If you remember the final accounts of a company, there they have categorized these two investments in a different heights. More than 12 months investment goes to the non-current investments, and less than 12 months it is current investment. The same is your categorization. And on the basis of nature of returns, if it is giving fixed returns, it's a fixed earning investment, and if it is not fixed, it's variable earnings. To be precise, or to give an example for this, if you have invested in the fixed deposit of bank, at the time of investment itself, you will able to learn that how much returns would be there after certain intervals. It may be quarterly, it may be half yearly, or it may be yearly. 10% stands 10%. It will return you 10% on your investment to you. But there are certain investment opportunities or investment avenues, say investment in shares. The shares, on a shares, the returns are dividend, and the dividends are based on the performance of that company. If company performs well and earns enough profit, then more dividend can be given, or vice versa. So there is no surety about how much returns will be received. So this is what a difference between fixed earning investments and variable earning investments. तो जहां पे फिक्स रिटर्न मिलता है, वो फिक्स रिटर्न अर्निंग इन्वेस्टमेंट्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, अगर आप
पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको फिक्स रिटर्न है, उसमें भी आरडी का रेट अलग होता है, फिक्स डिपॉजिट का, हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, तो हमें पता है कि इतना होगा। दूसरा एग्जांपल आप लोगे तो इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो तो डिबेंचर के नाम में ही होता है 9% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, तो नाम पे जो दिया है ना 6%, दैट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उतना रिटर्न मिलेगा। तो ये फिक्स्ड है, वहां पे बताया गया है कि इतना मिलेगा। बट देर आर सर्टन इन्वेस्टमेंट्स वेयर द रिटर्न्स आर वेरिएबल, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर में से जो पैसा मिलता है वो वो डिविडेंड के रूप में मिलता है, और डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता, कंपनी जितना मुनाफा करेगी उतना डिविडेंड देगी। दैट्स व्हाई, आशा करता हूं कि आप समझ लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नाउ एज पर दी as per the AS 13, that's what we are discussing. AS 13, they had classified the investment in these six categories. One, government and trust securities issued by government and local authorities. There is a government securities. Bonds, debentures issued by companies. That's another category. And a share issued by the company. That's another one. Deposit with companies or bank, another category. And immovable property is the fifth category. And the last one is other, covers the remaining items, such as a partnership capital investment, jewelry, investment in jewelry, gold, and others, and insurance policies, etc. These are the investment classification done under the AS 13, because for accounting of these um, investments, we have to treat these investment in a different manner. So let me tell you that as far as this chapter is concerned, we will be concentrating on the investment in a securities, shares and bonds only. Not other investments are going to deal with in this chapter. So तो ये जो AS 13 है, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन किया है 5 भागों में। पहला, government securities, bonds, then bonds and debentures of companies, then share capital of companies, then deposit with companies and banks, and immovable property and others. Others में partnership capital, jewelries, that is gold, jewelries, and all jewelry covers there, insurance policies, etc. ये कैटेगरीज की है, मगर हम अपने चैप्टर में हम रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं investment in a debentures, investment in a shares and bonds. तो इसके बारे में ही सोचेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। The cost of, when you are going to do the accounting, there are certain terms we should get it clear. We should be able to work out the cost of investment. What is mean by cost of investment? For whenever you purchase any investment, there's a possibility you may come across certain additional expenses. For instance, if you purchased, say, land and building, or any property, at that time you have to pay their stamp duty, you have to pay brokerage for the agent if anyone, then you have to pay the registration fee. These are the additional expenses, and these expenses must be added, should be added in the cost of purchases. So the point here which I want to put forward is that when you are calculating the investment purchase cost, which should include not only initial amount paid for acquiring that particular asset, plus incidental expenses incurred on that asset has to be added in the cost. It's just like the original cost concept of a fixed asset, same यहाँ पे होगा।
तो व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? जो इन्वेस्टमेंट परचेस करते समय जितना आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए खर्चा करते हो, उसके साथ साथ उसके आजू बाजू में जो खर्चा करना पड़ता है इंसिडेंशियल, जैसे कि कमीशन दिया, जैसे कि ब्रोकरेज दिया, जैसे कि आप स्टैम्प ड्यूटी देते हो या रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, ऐसे कुछ एडिशनल खर्चे आते हैं, वो भी उसी इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट का हिस्सा होता है, इसीलिए उसको उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो इन्वेस्टमेंट परचेस करने के लिए जितना खर्चा किया वो लिखो, फिर उसमें अगर आपने ब्रोकरेज दिया तो ऐड करो, या फीस दी या कमीशन दिए वो भी ऐड करो, आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की या और कोई एक्सपेंसेस किया वो सभी उसमें ऐड करो, और जो सभी का टोटल करके जो आपका प्राइस बनेगा, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो खर्चा आया हो जाने वो बाकी हेड्स में डाल दिया, और परचेस पर खाली जितना है उतना ही अगर परचेस कॉस्ट कंसिडर करे, तो आगे जाके जब आप वो इन्वेस्टमेंट बेचोगे, तब आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन दिस इन्वेस्टमेंट वुड बी रॉन्ग। तो वो ठीक ठाक आने के लिए अंडर सेक्शन, नॉट सेक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 टॉक्स अबाउट और टेल्स अबाउट कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट डिसाइड करते समय उसके ऊपर जो एडिशनल खर्चा आया वो उसमें ऐड करो। तो हम उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, जितना आप परचेस के लिए दे दिया उतना उसमें फिर एक्सपेंसेस ऐड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी डिस्कस करते हैं कि भाई डिस्पोजल, जब एसेट इन बेचने जा रहे हैं, when you sell out the asset, at the time there is a again possibility you may realize certain amount of it, and for realizing that amount you may incur some expenditure. If those expenditures are incurred, that has to be subtracted from the gross sales. So let's take a example here. When you sell out the investment for say 2 lakh rupees, and for selling that you incur 10,000 rupees as a brokerage is given, so or commission is given. So 2 lakh minus 10,000, 1 lakh 90,000 is your net receipt. Out of that 1 lakh 90,000, the carrying amount of that investment was 1 lakh 40,000. So 40,000 is profit. Or say if your proceeding is 1 lakh 90,000, and the cost was 2 lakh 50,000, then 60,000 loss. Carrying amount is the amount recorded in the books of accounts for that particular investment. That is a carrying amount. The cost of investment recorded in the books is what called as a carrying amount. So that is deducted from the net proceeds of the, what is mean by net? After deducting the expenses. So net sales proceed minus the carrying amount is what? A profit. So what is mean by carrying amount we'll be discussing in detail in the on the next slide. Thank you guys for watching this video. If you have any queries, doubt, difficulty, or feedback, feel free to write in a comment section. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get notification whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.